one sector which I want to recommend in this, as if you were to ask me where am I putting my decent amount of money, I have put decent amount of my money into pharma. Pharma was one of the first sectors up after 2020 का जो bottom था. Pharma was one of the first sectors which went up. Why? Because COVID में उनको बहुत फायदा हुआ इसीलिए. But आप देखेंगे this is the long term chart of pharma for 20 years. ये 20 साल का चार्ट है 2003 से लेके अब तक. आप उसमें देखेंगे कि pharma has had a phenomenal run which went on till here, which was at about 2015 2016 level. उसके बाद एकदम जबरदस्त एक करेक्शन आया फार्मा के, which lasted for about 5 years, right? So you take it from here to, let's say 2007-8 से ले लो, तो एक 10 years का रन हुआ. Many of the pharma stocks even started going up from 2005. So many pharma stocks had a 10 to 15 year upside run. तो ये डेकेडल राइज का जो करेक्शन था, इसीलिए फार्मा एंटायर सेक्टर रिट्रेस्ड एंड वाज इन अ पुल बैक फॉर ओवर 5 years. अच्छा, 5 साल होते होते ये कोविड आया. 2020 से फार्मा की दौड़ फिर से शुरू हो गई. और इस दौड़ में आप यहाँ देखेंगे, मैंने कोई विंडोज यहाँ पर मार्क कर रखा हूँ. दिस इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 3200 पॉइंट्स के ये विंडोज है इन फार्मा इंडेक्स. और फार्मा इंडेक्स पीरियडिकली ये 3200 पॉइंट जाता है और वहां पर एक करेक्शन देता. फिर ये 3200 पॉइंट गया और यहाँ पर एक करेक्शन दिया. फिर ये 3200 से थोड़ा सा अधिक बढ़ा, ये एंडिंग मूव था तो थोड़ा वोलेटिलिटी में ओवर शूट होता है. उसके बाद एक बहुत जबरदस्त करेक्शन दिया. अब यहां से जो आया फ्रॉम द प्रीवियस हाई, the market went up again by 3200 points on the index and you got one more correction. अब ये करेक्शन कंप्लीट हो गया और फार्मा इंडेक्स ने ये जो प्रीवियस विंडो का हाई है 3200 पॉइंट के, उसको अभी एक्सीड कर गया. इसका ये मतलब है कि यहां से एक नया 3200 पॉइंट की विंडो खुलेगी और फार्मा इंडेक्स करीबन 15,300 है. और तो दिस मीन्स दैट एट अ इंडेक्स लेवल, राइट, you are going to have a 20 to 25% rise. बिकॉज 3200 में इस पे ऐड करूं 15,000 के बेस के इंडेक्स पे, तो 20 से 25% हो जाता है. अगर 20 से 25% फार्मा इंडेक्स में बढ़ोतरी आती है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स विल गिव यू एनीवेयर बिटवीन 25 to 100%. दैट इज व्हाट इंडिविजुअल स्टॉक्स विल गिव यू. हाँ, अभी अपना फर्ज बन जाता है कि अच्छे इंडिविजुअल स्टॉक्स को अपन देखें और चुने और उसमें इन्वेस्ट करें. ये मेरा पिक ऑफ द सेक्टर है टू राइड द नेक्स्ट बूम. अच्छा, एक और चीज बताता हूं कि व्हाई आई एक्सपेक्ट फार्मा. अब आप देखिए, कोई भी सेक्टर जो है ना, कोई भी बुल मार्केट जो है, उसमें एक डोमिनेंट सेक्टर होता है. जैसे आप 90s में ले लेंगे तो वहाँ ये कमोडिटीज चल रहा था, तो सीमेंट थे, स्टील थे, ये सब जो 90s के बुल मार्केट थे, ये सारे हुए पीक आउट अराउंड 1994. तभी अपना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मार्केट हुआ, तो वो लोग सब आकर के ये मल्टीनेशनल के शेयर्स लिए. ये मल्टीनेशनल के शेयर चले, ये भी 94 तक एक पीक बनाए और वहां से एक बहुत बड़ा 5 साल के करेक्शन हुआ 1999 तक. अभी 1999 के बाद जो बुल मार्केट आया उसमें डोमिनेंट थीम था केवल आईटी का, और केवल एक ही सेक्टर था. तो ये जो बुल मार्केट था ये शॉर्ट लिव था. तो ये 2 साल चला, आईटी सेक्टर सब चले जबरदस्त, और वहां से 50 60 80 90% ये सब दे ऑल डिक्लाइंड और बहुत सारे स्टॉक तो डिसअपियर भी हो गए. उसके बाद अपना मार्केट कंसोलिडेट करके फिर एक दौड़ हुआ 2002-3 का बॉटम से लेके 5 साल की दौड़ हुई, 2008 की हाई बनाए. वहां पर अगेन यू हैड डोमिनेंट सेक्टर्स वेर इन आईटी का टॉप तो 2008 के बाद ही चला. तो फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम जो प्रीवियस बुल मार्केट के लीडर है वो नेक्स्ट बुल मार्केट में परफॉर्म नहीं करते. तो ये जो दौड़ चला, दिस वाज द नेक्स्ट बुल मार्केट. जो 2009 के बाद बुल मार्केट चला, उसमें फार्मा वाज द डोमिनेंट थी. और उसके बाद इसके आगे भी मार्केट गई ऊपर, मार्केट इज हियर, राइट.
whereas all pharma stocks were here. तो इसमें pharma stocks participate नहीं किए. Now one entire cycle has gone. A bear market cycle of 5 years is gone, and now it is time for a sector leadership to be taken by pharma. So I think cycle domination का likelihood कब होता है? When there are large number of stocks in that particular sector. अब आप एक छोटा सा सेक्टर ले लीजिए, सेमीकंडक्टर. आजकल बहुत बातें हो रही है, या थोड़े साल पहले बातें हो रही थी बायोटेक्नोलॉजी. अब इंडिया में सेमीकंडक्टर स्टॉक्स कहाँ है, बायोटेक्नोलॉजी के स्टॉक्स कहाँ है? अगर ये इतना बुलिश मार्केट हो गया, फर्ज करो कि यूएस में हो गया, तो इंडिया में कोई लिस्टेड स्टॉक ही नहीं है. तो ये सेक्टर लीडर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता. बट फार्मा एक ऐसा सेक्टर है, अलॉन्ग विद आईटी, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं. बड़े सेक्टर का क्या मतलब? उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स भी है, मिड कैप स्टॉक्स भी है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी है, और उसमें माइक्रो कैप स्टॉक्स भी है. So when a sector has got all these type of stocks, it allows everybody who's there in the market to participate in it. तो जो पेनी स्टॉक खरीदते हैं उनके लिए माइक्रो वाला सेगमेंट है, और हर लेवल के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. When there is a large number of stocks in any sector, only those sectors will become leader of the next bull market. So pharma qualifies for this. We have MNC stocks. We have very large Indian pharma company stocks. We have formulations. We have API people. We have basic drugs. We have so many varieties that which is there in the pharma line. That is all there. We have mid-cap stocks and small-cap stocks, so large number. So I think pharma will get patronized, and there is a very high level of acceptance of the pharma stocks in the market. People have made money. तो आसानी से अगर आप फार्मा कंपनी का टिप दे देंगे तो लोग आसानी से ले लेंगे. This is what happens with any sector which can lead the bull market. So I expect the pharma sector to lead the bull market. So let's just go and see what is there among the top pharma stocks. मैंने अलग अलग बनाए, उसमें देखा Sun Pharma. That is the topmost pharma stock in our list of Indian companies. That is still among the best performers. So all this performance I have taken again the pharma index. Okay. Glenmark जो है उसकी ट्रेंड में सबसे अधिक सुधार आई. So from the bottom, Glenmark has improved tremendously. And so Sun Pharma and Glenmark are leading. And Sun Pharma has been an outperformer to the pharma index for considerable period of time. Right now it is performing in line. Glenmark is there. Cipla, Dr. Reddy, and Torrent Pharma. These are also performing in line with the index. So the ones which are performing in line with index can all be part of your portfolio, right? Now, Aurobindo and Lupin have had very good moves in recent times, but they are less robust compared to all these stocks. They have also improved and they are performing in line. Market up hai, pharma index up hai, ye stocks bhi up hai. But Sun, Glenmark, Dr. Reddy, etc., they are much better in terms of return compared to Oro and Lupin. But it's only that they are less robust. That does not mean that they cannot catch up and perform better. You got to keep a watch on. Divi's Lab has been a total laggard. So Divi's Lab was thought of as a fantastic company. अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर से उनके जो रिजल्ट है that is coming out rather poorly. API business is an affected area within the pharma area. So I think one should be a little careful about Divi's Labs. It has gone up recent times, but it is still a laggard compared to this. So if you have finished investing into all this, then you may look into Divi's Lab. That is the conclusion among the top pharma stocks. If I go to the next rung of pharma stocks, then what is performing well in the second run? Ajanta Pharma, Kaplan Point, Alchem, Newland, Eris, JB. ऐसे बहुत सारे stocks है which are good pedigree stocks. They do well, good good balance sheets, good cash flow, good profitability. Everything is attractive.
So these are the companies which have done well. In fact, Ajanta Pharma, you will be surprised to know, in that decadal run from the 2005 bottom till about 2015 top, Ajanta Pharma was the topmost performer, better than any other counter, right? Then recently there have been a couple of stocks which had become very popular. Laurus Labs, Granules, right? If these had become very, very popular, and a lot of patronage was there, but they are seen underperforming sharply. So these are not stocks which you should be in a hurry to buy. Let them show up, let the numbers come, let the patronage from the market come, see the charts, correlated with the results, etc. वो दोनों मिलने के बाद ये चॉइस में जाए. Recently Gland Pharma had a sharp run up. कोई न्यूज वगैरह आया था तो इसमें बढ़ गया, लेकिन ग्लैंड फार्मा का इतना बड़ा गिरावट है कि उसमें बहुत सारे दुखियारे. तो ग्लैंड फार्मा चार्ट इज लाइक दिस. So there are so many people trapped all over, and this has been bought by a few people, but all these people will be looking for exits, right? So the land is not something to rush in to buy as the first of your portfolio lab. IPCA has been improving of late, but again is a sharp underperformer. एक एमएनसी फार्मा का एक सेक्शन होता है जिसमें बहुत फेथ होता है लोगों को, बिकॉज दे फील दैट दो स्टॉक्स कैन डू नो रॉन्ग. बट other than Novartis and more recently AstraZen, they have not really performed well. Glaxo, Sanofi, Pfizer, and stocks like this, they have been big underperformers, right? They have been big underperformers. So you may get big dividends, but you're not buying them for yield at the current prices. आपको yield तो मिलना नहीं. Yield is for those who bought them 20 years ago. So they are big underperformers, except for Novartis and AstraZen, right? In smaller stocks, right? There is a stock called Themis Medi, which has performed exceedingly well. Now, please understand that these are not recommendations I'm making. I'm just pointing out, using relative performance with the pharma index, how many stocks have performed. And there are commonly held perceptions about which stock is good and all that. I am using data to point out to everybody what is the current status of these stocks, how they are performing. So Themis Medi has performed. Themis Medi is not so well known. Well-known stocks are things like Wockhardt, Heikel, etc. But these are all still seen to be struggling. And Wock Pharma में कभी भी समाचार आते रहता है, बोले ये ले लो वो ले लो. Heikel is another such one, but उसमें अभी भी काफी struggle दिखाई दे रहा है charts पे. So that is the thing. So my suggestion here is, create your own, make it like a small case. आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें, जितना आपसे हो सकता है उसका निवेश करें, एक स्मॉल केस टाइप पोर्टफोलियो बनाइए. बट फार्मा में जरूर आप एक पोर्टफोलियो बनाएं फॉर द फ्यूचर, बिकॉज आई थिंक दैट विल परफॉर्म वेरी वेल. अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप कोई डेडिकेटेड फार्मा म्यूचुअल फंड्स पे चले जाइए, उस पे आपको मिल जाएगा कोई ना कोई. देयर आर सम 4 or 5 of them. I think Nippon has got the largest AUM in this, so you can look to invest in those. So this is how you can look at the pharma stocks. This is the two sets of pharma stocks.